Hi kids, welcome to your English class. I am your teacher and mentor Ananya, and once again I am back with a new lesson of your book, that is adjectives. A very familiar topic which you have read in your previous classes. Before we proceed, we have a warm-up exercise. Let's try to solve it quickly. Read the given sentences and circle the describing words. हमें यहाँ कुछ sentences दिए गए हैं. इन sentences को बहुत ध्यान से हमें read करना है और read करने के बाद हमें इन sentences में जो words describing words हैं, यानी ऐसे words जो noun या pronoun को describe कर रहे हैं, उन्हें circle करना है. Alright, so let us start. First, the dog is a faithful animal. Dog एक animal है. कैसा animal है? Faithful. So, faithful is describing word. Okay. This is a small house. कैसा house है? What kind of house? Small. So, small is describing word. I like red roses. कौन से कलर के रोजेस? रेड रोजेस. सो रेड इज डिस्क्राइबिंग द कलर ऑफ रोजेस. सो दिस इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. एंड एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल. एलिफेंट कैसा एनिमल है? ह्यूज यानी बड़ा. सो ह्यूज इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. दिस केक इज डिलीशियस. कैसा है केक? It is very tasty. It's very delicious. So delicious is describing the quality of cake. My best friend lives in my colony. मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी कॉलोनी में रहता है. मेरा कैसा फ्रेंड? मेरा बेस्ट फ्रेंड. ठीक है. सो बेस्ट इज डिस्क्राइबिंग द काइंड ऑफ फ्रेंड. आई होप यू हैव डन दिस एक्सरसाइज along with me. It's time to move ahead. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. यानी adjective एक ऐसा शब्द है जो noun और pronoun के meaning में कुछ addition करता है. ये noun और pronoun को describe या समझने में हमें मदद करता है. Okay? Often we describe some quality of a noun. It is done by adding a suitable word before the noun. और हमेशा याद रखिए adjectives यानी describing words जो हैं वो noun से पहले ही आ जाते हैं sentence में. Okay? Let us read some examples. कुछ examples हैं, इन्हें पढ़ के हम समझने की कोशिश करते हैं कि adjectives exactly किस तरीके से work करते हैं. The camel is a big animal. Camel एक बड़ा पशु है. Get me a hot cup of tea. मुझे एक गरम चाय का कप लाकर दो. She is very fond of cold drinks. उसे cold drinks बहुत पसंद है. This man is very fat. ये आदमी बहुत मोटा है. The earth has a round shape. अर्थ का शेप कैसा है? राउंड है. ओके? क्या आपने देखा यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पिंक कलर से हाईलाइटेड हैं. ये जितने भी वर्ड्स पिंक कलर से हाईलाइटेड हैं ये नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे कैमल कैसा एनिमल है? बिग यानी बड़ा. किस तरह कैसी चाय चाहिए या किस तरह की चाय की कप की हमने रिक्वेस्ट की है, डिमांड की है? गरम यानी हॉट. उसे ड्रिंक्स पसंद है. कैसे ड्रिंक्स? कोल्ड ड्रिंक्स. आदमी कैसा है? मोटा है, फैट है. द अर्थ हैज अ राउंड शेप. अर्थ का शेप कैसा है? राउंड है. तो ये सभी वर्ड्स जो हैं ये हमें नाउन्स के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं. इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड बिग टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन कैमल. द वर्ड हॉट स्टेट्स द क्वालिटी ऑफ नाउन टी. The word cold states the quality of the noun drinks. The word fat tells the quality of fatness of the noun man. The word round states the quality of the noun shape. And that is why we can easily say that the words big, hot, cold, fat and round are all adjectives. ये सभी क्या हैं? ये सभी adjectives हैं.
Now let's move to test yourself. It's time to do the exercises. We'll start with exercise number A. You can see some pictures are given. Look at each picture and put an adjective in the blank. So let's observe each and every picture and then add an suitable adjective to them one by one. A fat cock. Alright. A small egg. A happy baby. Sweet honey. Honey is sweet. A round ball. A poor beggar. सो इस तरीके से हमने हर एक पिक्चर को डिस्क्राइब करते हुए एक एक एडजेक्टिव ऐड कर दिया है. नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज बी. मैच ईच एडजेक्टिव विद इट्स नाउन एंड राइट द पेयर इन द ब्लैंक. यहाँ दो कॉलम्स हैं, एक एडजेक्टिव का है एक नाउन का है. हमें इन्हें मैच करना है और वो जो मैच किए हुए पेयर्स हैं उन करेक्ट पेयर्स को हमें इस स्पेस में लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट. Cunning, jackal. All right. High fever. Okay. Next is rude servant. Lovable baby. Lazy boy. Sharp knife. I hope you have understood how to match them. Okay. So children, you have seen how to do the matching. Now after we have matched the adjectives with the appropriate nouns, now we need to write the correct pairs here. ठीक है, तो शुरू करते हैं. हमने cunning jackal किया था. So we are going to write cunning jackal. Next, high fever. Next is rude servant. Then we have lovable baby. Next we have lazy boy. And next is sharp knife. So I hope children you have understood how to complete this exercise, and by now you have also completed the same along with me. So now kids, we are going to start with exercise C. Write a suitable noun in each blank. As you can see, certain adjectives are listed. We have to add a suitable noun to each one of them. Let's begin with the first one. A sweet, क्या हो सकता है मीठा? Sweet mango. So we can write mango. Next, a thick fog, or you can also write book, coat, anything. Then next is curly hair. A high mountain. A lazy man. You can also write a lazy boy. It's your choice. A nice person. A rude man. Or you can add servant or any other word of your choice. A deep tunnel.
A silly question. You can write any other word like boy, story. It's up to you. I hope children you have understood how to do this exercise. Now let's move to the next exercise, that is exercise D. Supply a suitable adjective in each blank. The streets of this city are dash. The streets of this city are narrow. Or you can write crowded. I cannot lift this heavy box. Third, a good servant never answers his master back. Buses cannot move in narrow lanes. Fifth one, the dash man stumbled and had a bad fall. The old man stumbled. A dash man lives in a bungalow. A rich man, or you can also write wealthy man. Both are correct. So, a rich man lives in a bungalow. I hope you have understood how to add adjectives in each blank and complete these sentences. Now it's time to come to exercise E. Given below is a list of adjectives. Write against each adjective another adjective with opposite meaning. So as you can see children, some adjectives are already given. Now you have to write another adjective, but you have to keep in mind that whatever adjective you write, that should be the opposite of the given adjective. तो पहला वाला देखते हैं. पहला वर्ड है हेवी. हेवी मीन्स समथिंग विच इज वेरी वेरी फुल. इट कैन नॉट बी लिफ्टेड इजीली. बहुत भारी है. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? लाइट, यानी हल्का. सो वी आर गोइंग टू राइट लाइट इन द स्पेस गिवन. नेक्स्ट वर्ड रफ. रफ का ऑपोजिट है स्मूथ. तो वी आर गोइंग टू राइट स्मूथ. Then sharp, the opposite of sharp is blunt. Next hard. For hard you have two adjectives, you can write any one. Either you can write soft or you can write easy. Both are correct. The next one tall, opposite of tall is short. Similarly, opposite of harsh is polite. Next one deep, the opposite of deep is shallow. And the last word happy, the opposite of happy is sad. So I hope children you have understood how to do these exercises and you have completed them along with me. Now it's time to move further towards activity time. Find and circle 5 adjectives in the word search. यहाँ बहुत सारे words का एक grid आपको दिया है. आपको इस word search में 5 adjectives ढूंढ के निकालने हैं. Then write the words in the blanks. Once you have identified all the 5 adjectives, उसके बाद you need to list those adjectives in this space. Now let's find out. I can help you with 1 or 2. The remainings you can do on your own. Like see, आपको कैसे निकालना है ढूंढ के. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं happy, HAPPY. ठीक है. ऐसे ही आपको और भी adjectives ढूंढ के निकालने हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लो. ठीक है. ऐसे ही और भी एडजेक्टिव्स ढूंढ के निकालिए और फिर उन्हें यहाँ पे लिखिए. आपको 5 एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं और 5 ही एडजेक्टिव्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव fun while solving this. So with this children, we are done with the topic of adjectives.
I hope you have understood the concept of adjectives clearly. Remember, adjectives are also known as describing words, and they help us to describe a noun or a pronoun in a better way. You also need to remember that adjectives are always placed before noun. So now, this is your teacher Ananya signing off for today. I shall meet you again with some new and interesting topic of your chapters very soon. So stay tuned for the upcoming videos, and till then keep on practicing and keep exploring. Bye bye and take care.